The TOEFL provides more accurate scores. Most preferred. So 4 out of 5 admission officers who were surveyed, they said that they preferred TOEFL over IELTS or any other English testing tool which is available in the world. So this is the kind of acceptance. Total 263 एडमिशन ऑफिसर्स सर्वे हुए थे यूएस यूनिवर्सिटीज के, जिसमें से 212 ने बोला कि हम TOEFL और IELTS दोनों को एक्सेप्ट करते हैं. उसमें से 152 ने प्रेफरेंस दी TOEFL को ओवर एनी अदर इंग्लिश टेस्टिंग टूल. मोस्ट फेयर एंड अनबायस्ड. तो व्हेन यू आर स्पीकिंग, आपके स्पीकिंग के रिस्पॉन्सेज को जज करते हैं 3 to 6 रेटर्स. So when I say often, so if majority says that no, it cannot be often, it has to be often, then I am out. Or if majority says no, it has to be often, then I am in. So there is no prejudice towards any student when the rule of majority prevails. क्योंकि स्पीकिंग रिस्पॉन्सेज को अगर एक आदमी जज करेगा, हो सकता है मुझे आपके बोलने का तरीका पसंद ना आए, तो मेरे दिमाग में एक प्रेजुडिस रहेगी कि नहीं ये तो नहीं हो सकता. बट अगर मेजॉरिटी कह रही है कि नहीं ये स्टूडेंट एकदम परफेक्टली बोल रहा है, देन ऑब्वियसली आई एम इन. मोस्ट टेस्टिंग साइट्स. So 4,500 plus testing centers in 165 countries. This is the biggest of the network which you will find across the world. कि जहाँ आपके पास में टेस्टिंग साइट इतनी सारी अवेलेबल है. आई एम श्योर आपके शहर में भी TOEFL का ऑथराइज टेस्ट सेंटर अवेलेबल है. लास्टली 100% एकेडमिक कंटेंट. तो जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स ऑल अबाउट योर इंग्लिश, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. बस खाली इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा, उसके बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा. This is the test format. Total 4 sections. Each section divided into 30 marks. 120 marks question paper. 10 minutes of break between 2 sections. And yes, note taking is allowed. So you can carry a plain piece of paper with you to make notes of certain things. But yes, unfortunately, cheating is not allowed over there. Now, where all you can find the resources for us to prepare for the TOEFL test or to register for the TOEFL test. So this is the website I was talking about. So you got the TOEFLGoAnywhere.org. जो आपकी yellow brochure में mentioned है. This website basically gives you each and every detail about the TOEFL, as good as spoon feeding. किसी बच्चे को steps पकड़ के सिखाना, उसी तरह की वेबसाइट है. आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके अंदर TOEFL के बारे में. Now what does this website basically include? It will tell you how to register. So you can register for the TOEFL test in 3 ways, either through phone or through mail or online. So either of the ways you can register. So it will tell you how to register for the TOEFL test. तो आप अगर फ़ोन के ऊपर अगर TOEFL test बुक करना चाहते हैं तो आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा. आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा. ईमेल आईडी आप भेज के कंफर्म करना चाहते हैं आप TOEFL test देना चाहते हैं तो वो आपको फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी. Then there is a test preparation resources which are available to you. So there are a lot of mock tests and mock questions which are being given over there in the test preparation resources. So you can attempt those questions and see as to where you stand on each of these 4 skills of yours, which is reading, writing, listening and speaking. You got the TOEFL institution search. This is a new feature which has been added up on this website. इसके बारे में मैं आपको सबसे लास्ट वाले सेक्शन में बताऊंगा. Free tips and questions. तो ETS रीडर्स की तरफ से फ्री क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अलावा आपको और एडिशनल फ्री क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वो अटेंड कर सकते हैं. और फ्री टिप्स फ्रॉम ETS रीडर्स. So how to crack the TOEFL test is all mentioned on this particular website. Then there is a path to test day which is also given over there. तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे जो टेस्ट डे आपका जिस दिन आप टेस्ट ले रहे हैं उस दिन आपको क्या क्या वैलिड ID प्रूफ कैरी करना है अपने साथ में, कैसे आप लॉगिन करेंगे, कैसे आप लॉग आउट करेंगे, आप अपने बिलोंगिंग टेस्ट सेंटर पे कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे. दी टेस्ट स्टेशन कोऑर्डिनेटर वुड बी गिविंग यू वन पर्टिकुलर टोकन थ्रू व्हिच यू कैन कीप इट इन योर लॉकर ऑल योर बिलोंगिंग. एंड द स्टडी ग्रुप वीडियो. So study group video is a kind of a virtual tour for you guys to see as to how students in a group are preparing for the TOEFL test. This is a test day map. So how soon you should start from your home on that test day. So entire school feeding is being done right from your home to reaching your test station. This is a test day map which is given over there in this website itself. Then there is a test day video. How does the test center actually look like? How students are appearing for the TOEFL test.
all being given on this particular test site video. Now there is a TOEFL planner. It's actually an 8-week plan which will help build each of your core skills, whether it is reading, writing, listening or speaking. Again, the EDS rated annotations are given over there with the sample questions and sample responses. This TOEFL planner is available either on the website itself, so you can either download this from the website, or you can go to any of the study abroad consultants in your city, that is Jaipur, or any authorized test center for TOEFL. Or you can go to any of the coaching institute who coaches for the TOEFL test and ask for this TOEFL planner. Guys, please don't pay even a single money to anybody for having this TOEFL planner. It comes absolutely free of cost. जैसे मैंने आपको एक ब्रोशर और प्लान डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसी तरह EDS की तरफ से ये सब फ्री आता है. आप किसी को भी ₹1 मत दीजिएगा अगर TOEFL प्लानर आपको लेना है और अगर वो पैसे मांगता है. It's free of cost. How many of you go on YouTube? Anybody explored youtube.com/TOEFL TV? Especially the people looking at study abroad as an option. So guys, this is the link, which is youtube.com/TOEFL TV. अगर आप इस पर्टिकुलर YouTube पे जाएंगे तो वहाँ पे फ्री टिप्स हैं स्पीकिंग रिस्पॉन्सेज के ऊपर टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ से. टीचर्स वो जो TOEFL की कोचिंग कराते हैं और स्टूडेंट्स वो जो TOEFL का एग्जामिनेशन क्रैक किए हुए हैं. प्लस जो यूनिवर्सिटीज आपको TOEFL के बेसिस पे एडमिशन दे रही हैं, उनका पूरा कैंपस का एक वर्चुअल टूर अपलोडेड है अलॉन्ग विद दी इंटरव्यूज और दी what I can say, the message of the director or the dean of that particular university or college concerned. How many of you have Facebook profile? Great. Anybody who has explored TOEFL Go Anywhere India page? Okay. You like that page? Great. So once you like that page, this page was launched last year in January 2011 for the Indian students. तो जब आप जाएंगे तो TOEFL Go Anywhere India के अलावा आपको और भी दिखेंगे कोरिया, चाइना एंड ऑल दैट. This was just like TOEFL Go Anywhere India page. So once you like that page, you start receiving a lot of information along with the resources for the TOEFL test, which is very handy, including the announcement of the date when the scholarship program would again come into the picture, and it would carry on till April. So till mid of April they accept the application. So there is a test site video which is available to you. All that you have to do is you have to go on ets.org/TOEFL/test site video. So this will give you a first-hand information about how does the test center look like, how a candidate who has come for the examination register himself for the test, what kind of valid ID proofs he produces before the test coordinator, and if in case he has a query, he cannot just shout, "इसका क्या होगा? मेरे को ही पूछना है." Something like that, you have to raise your hand, and then the test coordinator will come at your desk and he will, address your query. So it's your virtual passport to the entire world, because with 130 countries accepting the TOEFL test, you can go anywhere. Australia, Netherlands, Switzerland. This is the fourth section, the test prep and the skill building tools. So all those who are planning to take the TOEFL test, they should grab this book, which is Official Guide to the TOEFL Test. It's the Bible for any student who is planning to go abroad and take the TOEFL test. Please grab a book of this. I think in your city, I have been told, I have been doing seminars for last 2 days in your city. I have been told that you have got the crossword over here. So just go to crossword, I think that is the most leading bookstore we have in the country. And ask for this Official Guide to the TOEFL test. And आज फॉर ETS ऑफिशियल गाइड टू द TOEFL टेस्ट. आपको पियर्सन की भी मिलेगी, बैरन की भी मिलेगी, आपको और दूसरे पब्लिशर्स की भी मिलेगी, बट दिस इज द ऑफिशियल गाइड विच कम्स डायरेक्टली फ्रॉम ETS. सो प्लीज ग्रैब दिस वन विच इज मेंशन्ड ETS ओवर देयर. देख पा रहे हैं आप लोग? नाउ इट इंक्लूड्स एक्चुअल TOEFL IBT सैंपल टेस्ट क्वेश्चंस विद सैंपल रेस्पॉन्सेज एंड 2 full length practice tests. Again the ratings are given over there to the sample responses. तो sample questions दिए हैं, उसके बाद में sample responses आप अटेम्प्ट कीजिए बिना देखे. तो हर response के अगेंस्ट में वहाँ पे mentioned है कि 3 star response है या 4 star response है या 5 star response है. Primarily this book will help you out in your speaking and writing section. तो ये 2 sections है, उनको एक पूरा कवर अप कर लीजिए बुक.
इट्स अवेलेबल इन 2 फॉर्मेट, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप क्रॉसवर्ड पे जाके पेपर को फॉर्मेट में ले सकते हैं, उसके साथ में एक इंटरैक्टिव CD रोम आता है, तो यू कैन गो एंड बाय इट फ्रॉम अ बुक स्टोर और यू कैन डाउनलोड इट बाय पेइंग ऑनलाइन थ्रू द TOEFL वेबसाइट itself. So there is a TOEFL practice online also which is available to the students who register for the TOEFL test. So the moment you register for the TOEFL test, all that you have to do is go on ets.org/TOEFL practice. So when you go on this particular link, it simulates the real TOEFL test. तो ये as good as वो सिचुएशन है जहाँ आपको ऐसा फील होगा कि आप वास्तव में TOEFL का टेस्ट ले रहे हो, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप वॉच होगी, 4 घंटे का टाइम होगा, 4 सेक्शंस होंगे, वही आपके बीच के अंदर वो गैप होगा जिसके अंदर आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, इंस्टेंट स्कोर होगा, इंस्टेंट फीडबैक होंगे आपके चारों स्किल्स के ऊपर. सो यू कैन असर्टेन वेदर यू आर गुड एट स्पीकिंग एंड राइटिंग बट नॉट गुड एट रीडिंग और लिसनिंग. तो आप वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. और नए क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली अपलोड होते रहते हैं जैसे जैसे TOEFL एग्जामिनेशन थ्रू आउट द ग्लोब टेक प्लेस करता है. अराउंड 10 लाख एग्जाम थ्रू आउट द ईयर TOEFL के होते हैं. The English skill series, these are powered byamenglish.com. So all that you have to do is grab these 3 web-based interactive programs. So it will take care of your pronunciation, writing and identity. There are 3 sample questions which are available to the students. So what I'll do is I'll not sound very repetitive on these huge things. What I'll do is I'll leave a interactive CD about TOEFL. Whatever I have covered over here, it's all there in that particular CD, even much more. So I'll leave that CD with either ma'am or maybe I'll leave it with your director sir. So you can grab a copy of that and you can find out the entire details. Based on that, you can go on those links and you want to download the free sample questions, you can download that. You want to go for a print only format, this is the link through which you can go. And obviously there are some TOEFL tips which are available to the students. So you can go on that link and take those tips from there. And the moment you register for the TOEFL test, you get a test sampler. It comes absolutely free of cost once you register for the TOEFL test. Much to your delight, this is the last section and the shortest one. TOEFL Institution Advanced Search. तो जो मैंने आपको TOEFL को area.org साइट के बारे में बताया था कि how to register और उसी के अंदर TOEFL Institution search था. So this is a new feature which has been added up. So the moment you receive your TOEFL score, all that you have to do is put that TOEFL score and do a generic search. तो आपका 120 में से suppose 160 आया है, तो आप वो 160 put up कीजिए. It will give you a list of universities and colleges across the globe which are accepting you as a student based on that particular score of yours. So now that we are moving from say a paper-based test to an internet-based test, you get your faster score report. तो आपने एग्जाम दिया, उसके 2 वीक के अंदर ही आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा और आपके पास में